इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झा। आदौ मुख्याः वार्ताः। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः उक्तवती यत् ऊर्जा संरक्षणं केवलं विकल्पः एव नास्ति, अपितु वर्तमानसमयस्य आवश्यकता वर्तते। भाजपेति दलेन बिहारस्य मन्त्री नितिन नबीनः राष्ट्रिय कार्य अध्यक्षत्वेन नियुक्तः। ऑस्ट्रेलियादेशे सिडनी नगरस्य बॉन्डी समुद्रतटे आक्रमणे सम्प्रति यावत् 12 जनाः मृत्युमुपगताः, 39 जनाः च व्रणिताः। 25-2000 अंडर-19 एशिया कप क्रिकेट क्रीडायां भारत-पाकिस्तान दलयोर्मध्ये क्रीडा प्रचलति। अपि च 25-2000 स्क्वाश विश्वकप क्रीडायां चेन्नई नगरस्य एक्सप्रेस एवेन्यू मॉल इत्यत्र भारत हांगकांग देशयोर मध्ये अन्तिमा क्रीडा प्रचलति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः उक्तवती यत् ऊर्जा संरक्षणं केवलं विकल्पः एव नास्ति, अपितु वर्तमानसमयस्य आवश्यकता वर्तते। अस्मिन् अवसरे राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः राष्ट्रिय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार विजेत्रीन्, नवदिल्ल्यां राष्ट्रिय चित्रकारी प्रतियोगितायाः विजेत्रीन् च सम्मानितवती। सा अवोचत् यत् ऊर्जा संरक्षणस्य प्रत्येकं क्षेत्रं प्रकृतिं प्रति सहभागितां प्रतिबिंबयति। भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में से एक है। विकास की इस यात्रा में सभी नागरिकों तक बिजली की पहुंच, शहरीकरण, औद्योगिक विस्तार और जीवन स्तर पर सुधार के कारण ऊर्जा की आवश्यकता भी तेजी से बढ़ रही है। ऊर्जा की बचत ऊर्जा का सबसे पर्यावरण अनुरूप और विश्वसनीय स्रोत है। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः प्रकाशितवती यत् भारतेन निर्धारितसमयसीमायाः पूर्वं स्वस्य स्वच्छताम् ऊर्जां चादाय प्रतिबद्धता प्रपूरिता। एषा ऊर्जा दक्षतायाः उन्नयनार्थं तथा च कार्बन उत्सर्जनं न्यूनीकरणस्य दिशि महत्वपूर्णम् उपलब्धिं परिलक्षयति। भारत ने क्लीन एनर्जी की प्रतिबद्धताएं समय सीमा से पहले ही पूरी कर ली है। ये हमारी ऊर्जा दक्षता और डिकार्बनाइजेशन की दिशा में बड़ी उपलब्धि है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई है, जिसके तहत घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम्स लगाए जा रहे हैं। इसमें उन घरों को मुफ्त बिजली मिलेगी और फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम होगी। अद्य तावत् ऊर्जा संरक्षण दिवसः वर्तते। ऊर्जा दक्षतायां राष्ट्रस्य उपलब्धिं प्रकाशयितुं ऊर्जा संरक्षणस्य महत्वस्य विषये जागरूकतां च दातुं प्रतिवर्षम् अयं दिवसः आचर्यते। अस्मिन् अवसरे केन्द्रीय विद्युत् मन्त्रिणा मनोहरलालेन राष्ट्रिय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कारस्य विजेतृभ्यः शुभकामनाः प्रदत्ताः। सः इनं कार्यक्रमं विकासस्य, पर्यावरण संरक्षणस्य च प्रतिबिम्बरूपेण वर्णितवान्। सः ऊर्जा संरक्षणमाधृत्य राष्ट्रिय चित्रकारी प्रतियोगितायाः विजेत्रीन् अभिनन्दितवान्। ऑस्ट्रेलियादेशे अद्य सायंकाले सिडनी नगरस्य बॉन्डी समुद्रतटे आक्रमणे न्यूनातिन्यूनं 12 जनाः मृत्युमुपगताः। या भयोत्पादक घटना इति घोषिता वर्तते। प्रधानमन्त्री एंथनी एल्बनीज़ः इयं घटना हृदयविदारिका वर्तते इति अवोचत्। सामाजिकान्तर्जालीयपटले डॉक्टर जयशंकरः अवोचत् यत् एषा घटना हृदयविदारिका वर्तते। सः भयोत्पादकानां निन्दां च अकरोत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्वः आरभ्य राज्ञः अब्दुल्ला द्वितीयस्य इब्न अल हुसैन इत्यस्य निमन्त्रणमालक्ष्य जॉर्डन देशस्य 2 दिवसीय यात्रां विधास्यति। श्रीमोदिनः यात्राद्वयोः देशयोर्मध्ये कूटनीतिकसम्बन्धानां स्थापनायाः 75 वर्षपूर्तिं संगच्छते।
जॉर्डन देशे भारतीय राजदूतः मनीष चौहानः यात्रामुद्दिश्य कथितवान् यत् एषा यात्रा व्यापारस्य, खाद्यसुरक्षायाः, जनानां सम्बन्धस्य च महत्त्वपूर्णक्षणं वर्तते। अस्माकं वार्ताहरैः संसूचितं यत् जॉर्डन देशे 517,000 भारतीयाः प्रवासिनः निवसन्ति, ये हाशेमाइट् साम्राज्यस्य आर्थिक-सामाजिक संरचनायाः अभिन्नम् अङ्गम् अभवन्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन AIR चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। उपराष्ट्रपतिः CP राधाकृष्णन् महोदयः अद्य नवदिल्ल्यां सम्राट् पेरुम्बीडुगु मुत्तयारर् द्वितीय सुवर्णमारन् महोदयस्य सम्माननार्थं स्मारक डाक चिटिकां विमोचितवान्। अवसरेऽस्मिन् सम्भाषणं कुर्वन् श्री राधाकृष्णन् महोदयः तमिल संस्कृतेः भाषायाः च विषये प्रशासनस्य निरन्तरं साहाय्यं प्रशंसितवान्। काशी तमिल संगमम् इत्यादयः अनेके उपक्रमाः सन्ति यस्य असौ प्रशंसां कृतवान्। उपराष्ट्रपतिः अग्रे अवोचत् यत् सम्राट् पेरुम्बीडुगु मुत्तरायर् महोदयस्य विषये स्मारक डाक चिटिकायाः विमोचनं सम्मानस्य निरन्तरप्रक्रियायाः भागः वर्तते। केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामन्, राज्यसभायाः उपाध्यक्षः हरिवंशः, सूचना प्रसारण राज्यमन्त्री डॉक्टर L मुरुगनः च अस्मिन् अवसरे उपस्थिताः आसन्। उत्तरप्रदेशस्य भाजपेति दलस्य अध्यक्षरूपेण निर्वाचिताय पंकज चौधरी इत्यस्मै रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः अद्य शुभकामनाः अयच्छत्। सामाजिकान्तर्जालीयपटले श्रीसिंहः पंकज चौधरी इत्यस्य अनुशासितकार्यस्य प्रशंसाम् अकरोत्। सः अग्रे आशां प्रकटितवान् यत् श्री चौधरी इत्यस्य दीर्घकालिक राजकीय अनुभवः, कार्यदक्षता च उत्तरप्रदेशे दलस्य दृढीकरणे सहायिका भविष्यति। केन्द्रीय वित्त राज्यमन्त्री अथ च 7 वारं संसदीय सदस्यः पंकज चौधरी भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य उत्तरप्रदेशाध्यक्षत्वेन निर्वाचितः। केन्द्रीय मन्त्री भाजपेति दलस्य निर्वाचन प्रभारी पीयूष गोयलः अद्य लखनऊ नगरे आधिकारिक घोषणां कृतवान्। चौधरी भूपेन्द्रः औपचारिकरूपेण भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य ध्वजं पंकज चौधरी इत्यस्मै हस्तान्तरितवान्। महाराजगंज क्षेत्रात् 7 वारं संसदीय सदस्यः श्री चौधरी उत्तरप्रदेशे भारतीय जनता दलस्य अन्य अनुसूचित वर्गस्य प्रमुखपुरुषत्वेन अस्ति। राजनाथसिंहः, योगी आदित्यनाथः, ब्रजेश पाठकः, केशव प्रसाद मौर्यः, भूपेन्द्र चौधरी, स्मृति ईरानी, सूर्यप्रताप शाही, स्वतंत्र देव सिंहः, रमापति रमा त्रिपाठी इत्यादयः वरिष्ठनेतॄन् विहाय 20 नूतनाः सदस्याः निर्वाचिताः। अर्जेन्टीना देशस्य पादकन्दुकक्रीडकः लियोनेल् मेस्सी अद्य मुम्बई नगरे सम्प्राप्तः। भारतस्य 4 नगराणां यात्रायाः तस्य एषः 3यः चक्रः वर्तते। मुम्बय्यां सः अद्य क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया बेबॉर्न क्रीडाङ्गणे पेडेल G80 कप इत्यस्मिन् कार्यक्रमे भागं ग्रहीष्यति। तदनन्तरं सः प्रायः 5 वादने वानखेडे क्रीडाङ्गणे सम्प्राप्स्यति। अस्य कृते मुम्बई आरक्षिबलेन सुदृढानि सुरक्षोपायानि विहितानि। 25-2000 अंडर-19 एशिया कप क्रिकेट क्रीडायां भारत पाकिस्तान दलयोर्मध्ये क्रीडा प्रचलति। भारतीय दलेन 44,200 धावनाङ्कानां लक्ष्यं प्रदत्तम्। 25-2000 स्क्वाश विश्वकप क्रीडायां चेन्नई नगरस्य एक्सप्रेस एवेन्यू मॉल इत्यत्र भारत हांगकांग देशयोर्मध्ये अन्तिमा क्रीडा प्रचलति। इति वार्ताः।